Absolutely. Thank you so much, Shubhangi, for joining us and providing all those inputs on that story. Moving on now, in a major development ahead of Diwali celebrations, the Supreme Court of India has partially relaxed the blanket ban on firecrackers in the Delhi-NCR region, allowing the use and sale of certified green crackers under strict environmental and safety conditions. As per the top court's directive, only eco-friendly green crackers which produce reduced emissions will be permitted during specific time slots between 8 p.m. and 10 p.m. on Diwali night, and from 6 a.m. to 7 a.m. for the morning events such as Chhat Puja. The court has made it clear that traditional high-emission firecrackers remain completely banned and that only licensed sellers can distribute green crackers carrying QR codes approved by the Council of Scientific and Industrial Research. The sale of firecrackers through e-commerce platforms remains strictly prohibited. The Apex Court emphasized that this relaxation aims to balance the spirit of celebration with the need for environmental protection, especially given Delhi's severe air quality levels during winter. Authorities in Delhi, Haryana and Uttar Pradesh have been instructed to strictly monitor compliance, conduct random sampling and take firm action against violators or those selling banned crackers. The decision marks a significant shift from previous year's blanket restrictions, signaling the court's intent to enable controlled, responsible celebration while maintaining public health and ecological safety in the national capital region. So clearly, we are seeing a significant shift here in the court's stance. Joining me on the broadcast is Sambhav Sharma. Sambhav, the court has shifted its stance. There has been slight, the blanket ban has been lifted and people can actually buy approved green crackers for Diwali. Here, the top court has allowed sale and the use of green firecrackers in Delhi-NCR during Diwali, and the two-judge bench of Chief Justice of India, B.R. Gavai and Justice K.V. Chandran said this order was a temporary measure meant to assess whether a carefully regulated relaxation could coexist with efforts to curb pollution. And while passing this order, these were very important remarks. And here, the Supreme Court has allowed today, at 10:30 in a special bench of the top court, where the Supreme Court has permitted the sale and the bursting of the firecrackers in Delhi-NCR between October 18 to 21. And when it comes to the timings, they are like 6 to 7 a.m. in the morning and 8 to 10 p.m. in the evening. This is what the top court has described as a balanced approach between celebration, in a way celebrating festivities and protecting the environment. And on the other hand, if I talk about the important pointers here in the Chief Justice of India's order, the CJI has referred to the October 14, 2024 order of the Delhi government imposing complete ban on firecrackers. CJI has said as a temporary measure, we are proposing to issue that the bursting of crackers be allowed from 18 to 21st of October. And the other very important point is the patrol team shall conduct regular checks on green cracker manufacturers and QR codes on the green crackers to be uploaded on the website. And also, I want to tell our viewers that CJI has said that there shall be no cracker allowed in NCR region from outside the region. And fake crackers, if found, the license will be suspended. CJI has further said that Central Pollution Control Board, that is CPCB, and the State Pollution Control Board shall monitor the Air Quality Index, that is AQI, from 18th October and file a detailed report in the court. And also CJI has added that sampling of water also be done. Absolutely. So these are the
Absolutely, Yes. Sambhav. Thank you so much for all those details on that story. Joining us live on the broadcast is also Cabinet Minister of Delhi, Manjinder Singh Sirsa. Sir, thank you for joining us on this broadcast. Appreciate your time. The Supreme Court has finally lifted the blanket ban that was in place for the Diwali celebrations, and it has adopted a balanced approach that green crackers are now allowed and you can also celebrate, but you are also protecting the environment. जी बिल्कुल ये चैलेंज है एंड विल इंश्योर कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो दिल्ली के अंदर, जहां दिल्ली के लोग दीपावली को खुशियों से मना सकें, पटाखे चलाकर मना सकें, वहीं ग्रीन क्रैकर्स हों और उसकी कंप्लायंस वो ऑर्डर की इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के अंदर बिना ग्रीन क्रैकर्स के क्रैकर ना आए, ये हम इंश्योर करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी रिलीफ भी होगी फॉर पीपल ऑफ दिल्ली, बिकॉज बहुत सालों से ये ब्लैंकेट बैन था दिवाली के क्रैकर्स पे एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। जी बहुत बड़ी रिलीफ भी है और 8 साल बाद दिल्ली के लोग भी, जैसे पूरी दुनिया के लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली में पटाखे चलाते हैं, दिल्ली को वंचित रखा गया था पिछले 8 सालों से। ये मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोगों को उनके हकों से वंचित किया गया था, ये दीपावली तो साल में एक दिन के लिए आनी है और एक दिन अगर लोग पटाखे चलाना चाहते हैं वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, तो उसको तो मानना ही चाहिए था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय रेखा गुप्ता जी ने आग्रह किया और बताया कि हम ग्रीन क्रैकर्स को आपको अलाउ करना चाहिए और हम इनकी कंप्लायंस को इंश्योर करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की हियरिंग के बाद ये फैसला लिया। उन्होंने भी बड़े विवेक से सोचकर फैसला लिया है। मेरा मानना है कि बड़ा जरूरी था, वरना ऐसा हो जाता है कि एक धर्म के लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती दिखती है, उसका इल इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। जी, आपको और ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिस ऑल्सो कम्स कि जो दिल्ली का सिवियर एयर क्वालिटी है, इसीलिए इसको 8 सालों तक बैन किया गया था। हाउएवर क्योंकि अब ग्रीन क्रैकर्स जो कि रिड्यूस्ड एमिशंस करते हैं, उसके अनुसार अभी ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, पर दिल्ली गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि थोड़ी तो एमिशंस ज़रूर रहेगी और मॉनिटरिंग कैसे होगी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, अभी क्योंकि सर्दियां भी आने वाली हैं। सर्दियां तो आ गई हैं और जो आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए चैलेंज है। जहां रीजन को आज़ादी हो वहीं हमारे साफ सांस भी मिलें, ये हमारे लिए चैलेंज है, जिसको हम अभी आज से ही बैठकें बुलानी शुरू की हैं। आज ही हम इंश्योर करेंगे कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस के चलते पहले तो ग्रीन क्रैकर्स चलें और फिर AQI को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या प्रबंधों की जरूरत है वो हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। डस्ट मिटिगेशन से लेके व्हीकलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने से लेके इन सभी चीजों का भी पूरे ध्यान दिया जा रहा है। वी आर वर्किंग ऑन आवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ पोल्यूशन। सो व्हाट आई बिलीव इज कि दीपावली के एक दिन पटाखे चलने से डेफिनेटली एमिशंस में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन वो इतना ह्यूज नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर किसी को उस रीजन से वंचित रखा जाए, वो उसकी कॉस्ट पे रखा जाए। मुझे लगता है वो भी जस्टिफाइड नहीं था, इसलिए हम भी इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जी एब्सोल्युटली मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल्सो ज्वाइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट इज प्रवीण खंडेलवाल, BJP MP. Thank you so much for joining us, Mr. Khandelwal. Appreciate your time. Your first reactions to Supreme Court finally, adopting a balanced approach, allowing some green crackers for Diwali for the Delhi-NCR region. Well, it is a great day for the people of Delhi. Now they will be able to celebrate Diwali with great fervor. And particularly for what the Diwali is known for, and we must not we must not forget that we should celebrate Diwali with green crackers, but in a way that it should not cause any harm to the environment. My all thanks and gratitude to Delhi Chief Minister Mrs. Rekha Gupta, who appealed to Supreme Court and get the things allowed by the Supreme Court. And it is a great day also for the traders, those who are dealing in firecrackers, that after a great long spell of time of years together, now they will be able to earn their livelihood in a dignified manner.
and they will also be able to celebrate Diwali. But yes, though it is a big news, but we also alive to our responsibilities towards environment. Absolutely, Mr. Khandelwal. A great news for people living in the Delhi-NCR region now that they can burst green crackers. That's all that we have for you on this bulletin. We'll see you after a short break.